Hello friends, welcome to our new video. Let's try to solve the today's problem. Before that, if you are watching our video for the first time or if you did not subscribe our channel yet, then please go and subscribe our channel and hit the bell icon as well so that you can get the notifications of our new videos. Okay, so let's try to solve this problem. The today's problem is Newton's family. Okay, so here we have given a problem statement. The problem statement is Newton's family has n members. Every member except the member 1 has exactly one immediate parent with a smaller number. Okay. When a person X is immediate parent of a person Y, then the person Y is said to be an immediate child of the person X. Okay. So for given a immediate parent member numbered is the member numbered AI. For each member, find how many immediate child it has. Okay, so in the input, in first line we have given integer n, and the second line contains n minus 1 integers, that is a1 a2 up to an minus 1. Okay, and this is the constant for this problem. And here in this problem, what we have to do, we have to do the for each of the members numbered from 1 to n. We have to print the number of immediate children it has in in its own line. Okay, so we have to print the number of immediate children. Okay, in this problem. Okay, so to solve this problem, what we can do, let's try to understand the logic for this problem. Okay, so mm, okay, so to solve this problem, first what we can do, first here you can see that first we have to take the input, that is in first line we have given one integer number. Okay, that is n. Okay, so first what we can do, we have to take the input. Okay, that is in first line we'll get the input, that is one integer number n, and we have to take one array. Okay, in input. Okay, after that, after taking the input, what we can do, simply here. Okay, so we'll take one for loop to traverse this array. Okay, and inside, okay, this for loop we have taken to traverse the array. Okay, after that, inside this for loop, what we can do, simply इस फॉर लूप में हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे. ओके, लेट्स सपोज आंसर करके वेरिएबल लेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, ये एरे के एलिमेंट्स को स्टोर कर देंगे. जो एरे ऑफ आई, दैट इज जो भी एरे के एलिमेंट्स है इसमें हम उसको स्टोर कर देंगे. और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरे के एलिमेंट्स आंसर में स्टोर कर देंगे. ओके, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, जो एरे है, एरे ऑफ जो आंसर है, आंसर -1 करेंगे और इसको प्लस प्लस कर देंगे. ओके, सो एरे में से जो एलिमेंट्स है उसमें से 1 को माइनस कर देंगे और उसको इसको प्लस प्लस कर देंगे. ओके, इंक्रीमेंट कर देंगे इस एरे को. ओके, आफ्टर दैट, और instead of this you can do like this as well, like यहाँ पे एक वेरिएबल में एरे के एलिमेंट्स स्टोर करेंगे. पहले यहाँ पे हमने क्या किया था, एरे के जो एलिमेंट्स है एक वेरिएबल में स्टोर किए थे. ओके, और उसमें से फिर जो ये आंसर है उसमें से 1 माइनस करके फिर उसको प्लस प्लस किया था. ओके, इंस्टेड ऑफ डूइंग लाइक दिस, हम सिंपली क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम ऐसा भी कर सकते हैं, दैट इज यहाँ पे एक एरे है और एरे के अंदर जो भी मतलब एलिमेंट्स लेंगे, हम एरे के एलिमेंट्स इनपुट, दैट इज लेट सपोज एरे ऑफ आई, जो एलिमेंट्स लेंगे उसमें से हम क्या करेंगे, ये डायरेक्टली यहीं पे -1 कर देंगे. एंड
इसको प्लस प्लस कर देंगे। ओके, यू कैन डायरेक्टली, आप ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक दिस वी कैन राइट लाइक दिस एज वेल। ओके, आफ्टर दैट what we can do, uh, we have, after that, after doing this, simply what we can do, we'll print the array elements. Okay, so for that यहाँ पे एक for loop चलाएंगे हम। ओके, दैट इज I is लेस देन n जो है वहां तक चलाएंगे, और जो array के एलिमेंट्स हैं उसको प्रिंट कर देंगे, दैट इज प्रिंट array. Okay, so this is the logic to solve this problem. Okay, like this we can solve this problem. Okay, so let's try to write the code for this problem. Okay, so first what I can do, I'll remove this one. Okay, and now here, first what I can do, I have to take the input from the user. Okay, ओके, सो यहाँ पे उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक स्कैनर क्लास लिखूंगा, दैट इज स्कैनर sc equals to new scanner, and inside this simply I will write system dot in. ओके, देन एक नंबर हम इनपुट लेंगे, लेट सपोज इंटीजर n इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, एक नंबर इनपुट ले लिया, अभी हम क्या करेंगे, एक एरे को डिक्लेयर करेंगे, लेट सपोज इंटीजर एरे डिक्लेयर किया, और न्यू इंट, एंड यहाँ पे उसकी साइज पास कर देंगे एरे की। ओके, एक एरे डिक्लेयर किया, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर लूप चलाएंगे। ओके, और इस ये जो फॉर लूप है, इसमें हम लिखेंगे इंटीजर I इक्वल्स टू 0, देन I इज लेस देन n, इसको हम कहाँ तक चलाएंगे, n-1 तक चलाएंगे। ओके, एंड I प्लस प्लस कर देंगे। ओके, after that inside this for loop, what we can do, here simply we'll create one variable, let's suppose answer equals to sc dot next int। ओके, एरे के एलिमेंट्स को आंसर में स्टोर किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, एरे ऑफ आंसर -1 करेंगे और इसको प्लस प्लस कर देंगे। ओके, ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे। ओके, एंड इनसाइड ये फॉर लूप, अभी हमको एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करना है, सो दैट उसके लिए हम ये फॉर लूप चलाएंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे इंटीजर I इक्वल्स टू 0, I इज लेस देन, अभी ये n तक चलाएंगे। ओके, I प्लस प्लस एंड system dot out dot println, and inside this simply I'll pass array of I। so array के एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए ये लिखा हमने अभी। नाउ वी हैव रिटर्न द कोड फॉर दिस प्रॉब्लम, अभी इसको रन करके देखते हैं। सो हम क्या करेंगे, इनपुट को कॉपी करूंगा, एंड इसको लेट्स पेस्ट इट हियर इन द इनपुट फील्ड। ओके, नाउ लेट्स try to run, and let's see whether this approach works or not. Okay, so click on run. Okay, output showing, okay, you can see that output is 22000, okay, which is correct. Okay, now let's see for the second sample input. So I'll copy this, let's paste it here, let's click on run,
output for this should be like this 9000. Okay, let's see. Okay, you can see that 9000 output is correct. Okay, this as well. Let's try this third sample input. So I'll copy this and let's paste it here in input. Okay, and let's click on run. Output for this should be like this 1111 and at the end 0. Okay, let's see. Okay, you can see that output is correct. Okay, you can do like this. Okay, also in this for loop, instead of writing like this, you can do like let's see, यहाँ पे डायरेक्टली आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली एरे ऑफ जो इसके अंदर डायरेक्टली वो एलिमेंट जो हम ये करने वाले इनपुट लेने वाले एरे ऑफ sc डॉट नेक्स्ट इंट डायरेक्टली यहाँ पे -1 एंड ++1 ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं. ओके, सो इसको रन करके देखते हैं ये वर्क होता है क्या. सो लेट्स सी फॉर दिस only. So click on run. So the output should be like this 111 and 0. Okay, you can see that this like this as well it works. Okay, so now what I can do, I'll just submit this code and let's see whether all the test cases will pass or not. So click on submit. Okay, now you can see that the test cases are running here. Okay, so here you can see that all the test cases has been passed. Okay, so this is the one approach to solve this problem. Okay, so there is another way as well to solve this problem. ये जो हमारा जो कोड है जो अभी हमने ये प्रोग्राम के लिए लिखा, it takes more time to execute this code. Okay, so now अभी हम दूसरा एक अप्रोच देखेंगे. वो जो अप्रोच है वो इससे ज़्यादा इससे कम टाइम लेगा इस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए. ओके, so let's see for this approach. Okay, so first what I can do, I'll just comment out this part. Okay, which is the first code which we have written. Okay, now अभी यहाँ पे जो सेकेंड अप्रोच है वो लिखेंगे हम यहाँ से. ओके, उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी सेकंड जो अप्रोच है उसमें बफर रीडर यूज करेंगे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए. ओके, एंड ऑल्सो हम ये जो अभी सेकंड अप्रोच देख रहे हैं उसमें हम स्ट्रिंग बिल्डर का भी यूज करने वाले हैं सो दैट जो हमारा प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होने के लिए कम टाइम लेगा. ओके, सो लेट्स राइट द कोड फॉर दिस अप्रोच. सो आई विल राइट बफर्ड रीडर br equals to new buffered reader. Inside this new input stream reader, and inside this I'll write system dot in. ओके, ये बफर रीडर ये क्या हमने अभी एक नंबर हम लेने वाले इनपुट फर्स्ट. सो उसके लिए इंटीजर n इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्सिंट. ओके, सो उसके लिए लिखेंगे इंटीजर डॉट parse int. Okay, and inside this simply हम लिखेंगे br dot read line. ओके, br dot read line. ओके, ये एक नंबर हमने यूजर से इनपुट ले लिया. अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे, एक एरे को डिक्लेयर करेंगे. ओके, सो यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर करेंगे. लेट्स सपोज इंटीजर एरे इक्वल्स टू न्यू इंट एंड यहाँ पे उसका साइज इसके अंदर पास कर देंगे. ओके, एक एरे को डिक्लेयर किया. नेक्स्ट क्या करेंगे हम यहाँ पे और एक स्ट्रिंग का यूजर से इनपुट लेने के लिए यहाँ पे एक स्ट्रिंग एरे लिखेंगे. दैट इज स्ट्रिंग लेट्स सपोज str इक्वल्स टू br dot read line dot split. Okay, and inside this okay ये यूजर से इनपुट
लेने के लिए ये हमने ये वाला एरे स्ट्रिंग का क्रिएट किया। ओके, नाउ यहाँ पे एक फॉर लूप लिखेंगे हम, जो एरे है उसके एलिमेंट्स को यूजर से इनपुट लेने के लिए। सो आई राइट इंटीजर I equals to 0, then I should be less than n minus 1. Okay, and I plus plus. Okay, now after that, inside this for loop, what I can do simply, I'll write create one variable. Let's suppose integer. mm, let's suppose कोई भी नाम दे सकते हैं। let's suppose इसको हम नंबर नाम देते हैं। integer number equals to integer dot parseInt, and inside this simply we'll write str of I. ओके, ये एरे के जो एलिमेंट्स हैं उसको हमने इस नंबर में स्टोर कर दिया। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो एरे है एरे ऑफ नंबर -1 करेंगे और इसको क्या करेंगे, प्लस प्लस कर देंगे। ओके ओके, नाउ आफ्टर दैट व्हाट आई कैन डू, to print the output I'm going to use the string builder. Okay, so for that I will write string builder, and I will give the name, let's suppose str builder. Okay, I'll give the name like this, string builder str builder equals to new string builder. Okay okay, now after that what I can do, I'll write one for loop. Inside this for loop I will write integer I equals to 0, then I is less than n, then I plus plus. Okay, after that inside this for loop, what I can do, I'll use str builder dot append, append. Okay, str builder dot append. Okay, and inside this what I can do, I'll write array of I, and इस यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू लाइन भी हम ये कर देंगे। सो उसके लिए क्या करेंगे, प्लस स्लैश एन कर देंगे, सो दैट यहाँ पे न्यू लाइन ये हो जाएगी। और यहाँ पे आप लाइन सेपरेटर करके भी एक ये है उसको भी यूज कर सकते हैं। ओके, बट हम डायरेक्टली स्लैश एन यूज करेंगे। ओके, एंड लास्ट में हम प्रिंट कर देंगे system dot out dot println. Okay, and inside this we'll directly print the string builder. Okay okay, so we have written the code. Now let's try to run. Okay, before that, before running this code, here in this, here we have used bufferedreader. So whenever we use the bufferedreader, we have to write here throws input output exception, because if we don't write this, it throws an exception. So that it is compulsory to write this whenever we are going to use the string builder. Okay, to take string bufferedreader to take the inputs. Okay, now what I can do, I have written the code. Now let's try to run this. Okay, so I'll copy this one, let's paste it here, and let's see whether this approach or this code works or not. So click on run. Output should be this, that is 22000. Okay, now output shows it gives an wrong output. Why so? Let's see. String builder str builder equals to new string builder. Okay, for
I equals to 0, then I is less than n, I plus plus, then str builder dot append array of I. I think array of I, okay, plus slash n, and okay, so I think here we'll use only print. Here what I can do, it shows it wrong output, so for that I'll just try by removing these curly braces of for this for loop, and let's check whether it works or not. Okay, so I have removed these curly braces for this for loop. Now let's see. Okay, now you can see it shows the correct output. Okay, so this is the only reason, that is why our code is showing incorrect output, that we have just removed this curly braces from here and the output is correct now. Okay, now let's try to submit the code and let's see. Okay, so click on submit. Okay, so you can see that all the test cases has been passed by using this approach as well. Okay, so दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।